Today we are going to start with Arbitration and Conciliation Act 1996. It has been amended once in 2015 with effect from 31st December 2015, and then it was amended in 2019. So we will be dealing with part 1 first. It has 43 sections, and the main purpose of this act is to provide for all the provisions relating to arbitration and conciliation. Earlier there was an Arbitration Act 1940 which has become outdated, and thereafter the need was felt for this act of 1996, and we can start here. An act to consolidate and amend the law relating to domestic arbitration, international commercial arbitration, and enforcement of foreign arbitral awards, and also to define the law relating to conciliation and matters connected therewith. So इसमें domestic arbitration, international commercial arbitration, enforcement of foreign arbitral awards, and law relating to conciliation, ये main points हैं. Then the United Nations Commission on International Trade Law, that is UNCITRAL, has adopted UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration 1985 and UNCITRAL Conciliation Rules 1980. So this act has adopted the principles from both these rules. Okay, then के बाद सेक्शन 1 पे आ जाते हैं हम. दिस एक्ट में बी कॉल्ड आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 एंड इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया. एंड पार्ट इसके बाद एक हमारा आ गया आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 2019. ठीक है, तो इट provided that part 1, 3 and 4 shall extend to state of Jammu and Kashmir only in so far as they relate to इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन ओनली. तभी पार्ट 1, 3, 4 अप्लाई होगा इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन के केसेस में जम्मू एंड कश्मीर में. इट शिल कम इन टू फोर्स ऑन 27 अगस्त 1996, और जो 2019 की अमेंडमेंट है वो इन फोर्स आई है 9 अगस्त 2019. ठीक है, देन उसके बाद सेक्शन चैप्टर 2 है, जिसमें सेक्शन 2 है डेफिनेशन में 2A है. आर्बिट्रेशन मीन्स आर्बिट्रेशन वेदर और नॉट एडमिनिस्टर्ड बाय परमानेंट आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन. 2B आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट मीन्स एग्रीमेंट रेफर टू इन सेक्शन 7. 2C आर्बिट्रल अवार्ड इंक्लूड्स इंटरिम अवार्ड. 2D आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल मीन्स द सोल आर्बिट्रेटर और अ पैनल ऑफ आर्बिट्रेटर्स. दोनों ही आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल कहेंगे हम. एक 2CA 2019 में ऐड हुआ है आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन, दैट इज़ एन इंस्टीट्यूशन दैट इज डेजिग्नेटेड बाय हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट अंडर दिस एक्ट. ठीक है, तो यहाँ तक कौन सी डेफिनेशन? सबसे पहले आर्बिट्रेशन, देन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, देन आर्बिट्रेशन अवार्ड, आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन एंड आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल. 2D तक होगी. देन 2E कोर्ट में 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है. इन केस ऑफ आर्बिट्रेशन अदर देन इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन, मतलब दैट इज इन केस ऑफ डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन, कोर्ट मीन्स प्रिंसिपल सिविल कोर्ट ऑफ ओरिजिनल jurisdiction in a district and includes the high court in exercise of its ordinary original civil jurisdiction, having jurisdiction to decide the dispute forming the subject matter of arbitration, but does not include civil court or court of small causes, the grade inferior to civil court or court of small causes. And in case of international commercial arbitration, court means high court in exercise of its ordinary civil jurisdiction. अगर डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन है तो उसमें 2 कोर्ट्स हैं, सिविल कोर्ट्स ऑफ ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन एंड हाई कोर्ट इन एक्सरसाइज ऑफ ऑर्डिनरी ओरिजिनल सिविल जुरिस्डिक्शन. और इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन में कोर्ट मीन्स हाई कोर्ट इन एक्सरसाइज ऑफ इट्स ऑर्डिनरी ओरिजिनल सिविल जुरिस्डिक्शन. ठीक है, देन 2F इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन मीन्स द आर्बिट्रेशन रिलेटिंग टू डिस्प्यूट्स अराइजिंग आउट ऑफ लीगल रिलेशनशिप वेदर कॉन्ट्रैक्चुअल और नॉट considered as commercial under law in force in India, and at least one of the parties is
an individual who is national or habitually resident in country other than India, or a body corporate incorporated outside India, or association or body of individuals whose central management and control is outside India, और गवर्नमेंट ऑफ अ फॉरेन कंट्री. अगर इनमें से कोई भी एक पार्टी है हमारे कॉन्ट्रैक्ट की, देन वो इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन में फॉल करेगा. अगर कोई डिस्प्यूट अराइज होता है आउट ऑफ लीगल रिलेशनशिप, whether that relationship is contractual or not, it must be commercial. ठीक है. देन 2G लीगल रिप्रेजेंटेटिव, ये सेम जो CPC में है, represent a state of deceased person intermeddle with the state of deceased or acts in representative character and on whom the estate devolves on death of the party so acting. ये important नहीं है, HIG छोड़ सकते हैं हम. उसके बाद सेक्शन 2 सब सेक्शन 2, दिस पार्ट शैल अप्लाई वेयर द प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन इज इन इंडिया. ठीक है. देन प्रोवाइडेड सेक्शन 9, सेक्शन 27, सेक्शन 37 सब सेक्शन 1, सेक्शन 37 सब सेक्शन 3 शैल अप्लाई टू इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन even if the place of arbitration is outside India and arbitral award is enforceable and recognized under provision of part 2 of this act. वैसे तो ये पार्ट जो है सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 43 तक वो सिर्फ वहीं अप्लाई होता है वेयर प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन इज़ इन इंडिया, दैट इज़ डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन है. बट इन केस ऑफ बट सेक्शन 9, 27 और 37 also apply in case of international commercial arbitration even if place of arbitration is outside India. ठीक है. then section 2 subsection 7, arbitral award under this part shall be considered as domestic award. ठीक है, ये पॉइंट भी MCQs में बन सकता है. then section 2 subsection 9, where this part other than clause A of section 25 section 32 refers to a claim, it shall also apply to a counter claim. Where it refers to a defense, it shall also apply to a defense to that counter claim. ठीक है, ये जस्ट बार रीडिंग की होगी तो ठीक है. सेक्शन 3, रिसीट ऑफ रिटन कम्युनिकेशन unless otherwise agreed by the parties, any written communication is deemed to have been received if it is delivered to the addressee personally or at his place of business, habitual residence or mailing address. अगर वो वहाँ पर डिलीवर होगी देन हम डीम्ड रिसीव्ड मान लेंगे रिटर्न कम्युनिकेशन को. एंड इफ नन ऑफ द प्लेसेस रेफर्ड इन क्लॉज ए कैन बी फाउंड, देन इफ द by any other means which provides a record of the attempt to deliver it, then it is deemed communication of the written communication. The communication is deemed to have been received on the day on which it is so delivered. Then this section shall not apply to written communication in respect of proceedings of any judicial authority. अगर किसी जुडिशियल अथॉरिटी की प्रोसीडिंग्स को हमने कम्युनिकेट करना है तो उसके लिए हम सिर्फ ये नहीं कह सकते कि वो अगर हमने अपनी तरफ से डिलीवर कर दिया तो वो सामने वाले को रिसीव भी होगी है. नो. और द कम्युनिकेशन इज डीम्ड टू हैव बीन रिसीव्ड ऑन द डे, अदरवाइज ऑन डे इट इज़ डिलीवर्ड. In section 4, waiver of right to object, a party who knows that the provision of this part from which parties may derogate or requirement under arbitration agreement have not been complied with and yet proceeds with the arbitration without stating his objection to such non-compliance without undue delay, or if a time limit is provided within that time, it shall be deemed to have been waived his right to so object. That is, if he had knowledge of the non-compliance of provision or requirement of arbitration agreement and still he proceeded with the arbitration without raising any objection within the prescribed time, then it shall be deemed that he has waived his right to object to the non-compliance. Section 5, extent of judicial intervention, notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, in matters governed by this part, no judicial authority shall intervene except where so provided by this part. तो इसका मतलब है कि कोर्ट सिर्फ वहीं पे अपनी जुडिशियल अथॉरिटी एक्सरसाइज कर सकती है जो अगर इस एक्ट में प्रोवाइडेड है, इस पार्ट में. अदरवाइज
कोई नहीं कर सकते हैं। सेक्शन 6 एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंस। इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द कंडक्ट ऑफ आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स द पार्टीज or arbitral tribunal with the consent of parties may arrange for administrative assistance by a suitable institution or person. Parties खुद और tribunal with the consent of parties may arrange for administrative assistance. ठीक है, ये हो गया। नहीं, उसके बाद आता है चैप्टर 2 आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, जिसमें जो कि सेक्शन 7 में हमने डेफिनेशन में भी पढ़ा था कि आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट मीन्स एग्रीमेंट एंटर अंडर सेक्शन 7। तो सेक्शन 7 आ गया है। In section 7 subsection 1, arbitration agreement means an agreement by the parties to submit to arbitration all or certain disputes which have arisen or which may arise between them in respect of a defined legal relationship, whether contractual or not. ठीक है, तो ये पार्ट्स में डिवाइड करके करेंगे तो इजीली हो जाएगा। पहली बात एग्रीमेंट है बाय द पार्टीज, पर्पस है टू सबमिट टू आर्बिट्रेशन all or certain disputes which have arisen or which may arise between them in respect of a defined legal relationship, whether contractual or not. It may be in the form of arbitration clause or in the arbitration clause in the contract or in the form of a separate agreement. It shall be in writing. It shall be signed by the parties. Arbitration agreement is in writing if it is contained in a document signed by the parties or in exchange of letters, telegram, telex or other means of telecommunication including electronic means which provide a record of the agreement, or an exchange of statements of claim and defense in which existence of agreement is alleged by one party and not denied by the other. The reference in contract to document containing arbitration clause constitutes an arbitration agreement if contract is in writing and the reference is such as to make that arbitration clause part of the contract. ठीक है, तो रेफरेंस अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट का हमने किया है एक डॉक्यूमेंट में, एक कॉन्ट्रैक्ट में एक डॉक्यूमेंट का रेफर किया है जिसमें कि आर्बिट्रेशन क्लॉज है, देन इट शेल कॉन्स्टिट्यूट आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट इफ द कॉन्ट्रैक्ट इज इन राइटिंग एंड द रेफरेंस इज मेड टू दैट आर्बिट्रेशन क्लॉज पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, उसके बाद सेक्शन 8 पावर टू रेफर द पार्टीज टू आर्बिट्रेशन वेयर देयर इज़ एन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। इसको हम ऐसे भी आंसर कर सकते हैं कि अगर कोर्ट के पास ऑलरेडी प्रोसीडिंग चल रही है, देन कोर्ट में स्टेट्स प्रोसीडिंग एंड रेफर द डिस्प्यूट टू द आर्बिट्रेशन। कब? ये हम पढ़ते, अ जुडिशियल अथॉरिटी बिफोर विच एन एक्शन इज ब्रॉट इन मैटर विच इज सब्जेक्ट ऑफ एन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट शेल, if a party to arbitration agreement claiming through or under him so applies not later than the date of submitting the first statement on substance of the dispute, then notwithstanding any judgment, decree or order of the Supreme Court or any court, the court shall refer the parties to arbitration unless it finds that prima facie no valid arbitration agreement exists. तो अगर किसी जुडिशियल अथॉरिटी के पास पार्टी ने एक एप्लीकेशन लगा दी है टू रेफर द मैटर टू द आर्बिट्रेशन, और ये एप्लीकेशन कब लगाई है? बिफोर सबमिटिंग हिज फर्स्ट स्टेटमेंट ऑन द सब्सटेंस ऑफ डिस्प्यूट, देन द कोर्ट के पास पावर, कोर्ट को कोई डिस्क्रिशन या कोर्ट शेल रेफर द dispute to the arbitration unless it finds a prima facie that no valid arbitration agreement exists. ठीक है, then section 8 subsection 2 application referred shall be accompanied by original arbitration agreement or a duly certified copy thereof. अगर वो provided if their original agreement or certified copy is not available with the party applying and the said agreement or certified copy is retained by other party, then the party applying may shall file such application along with copy of arbitration agreement and a petition praying the court to call upon the other party to produce the original arbitration agreement before the court. Notwithstanding that an application has been made under subsection 1 that the issue is pending before judicial authority, arbitration may be commenced or continued and an arbitral award may be made. इससे फ़र्क नहीं, अगर जुडिशियल अथॉरिटी के पास एक इशू पेंडिंग है भी
तब भी आर्बिट्रेशन स्टार्ट हो सकती है एंड कंटिन्यू भी हो सकती है और अब अवार्ड भी पास किया जा सकता है। ठीक है, अब इसमें एक ये है कि ये पॉइंट भी आ सकता है, मियर एग्जिस्टेंस ऑफ आर्बिट्रेशन क्लॉज इन एन एग्रीमेंट डज नॉट बार द जुरिस्डिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट ऑटोमेटिकली। उसके लिए पहले एप्लीकेशन लगेगी तभी सिविल कोर्ट की जुरिस्डिक्शन बार होगी, अदरवाइज हम मान लेंगे कि वेवर कर दिया है, जो कि हमने सेक्शन 4 में पढ़ा था। ठीक है, और एक ये हमने टर्म पढ़ी थी सबमिशन ऑफ अ स्टेटमेंट ऑन सब्सटेंस ऑफ डिस्प्यूट। इसका मतलब क्या होता है, not only filing written statement but filing of any statement, application, affidavit filed by defendant prior to filing of written statement will be construed as submission of statement on substance of dispute. Basically it shows that his intention to submit himself to the jurisdiction of court and waive his right to seek reference to arbitration. ठीक है, then section 9 interim measures by the court. पार्टी इसमें 2016 में भी अमेंडमेंट भी हुई है, जो कि है अब इसमें क्या है, ए पार्टी में बिफोर और ड्यूरिंग आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स और एट एनी टाइम आफ्टर मेकिंग ऑफ अवार्ड बट बिफोर इट इज़ एनफोर्स्ड मे अप्लाई टू द कोर्ट, किस चीज़ के लिए, फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ गार्डियन और फॉर अ माइनर और पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड और फॉर इंटरिम मेजर फॉर प्रोटेक्शन in respect of following matters. First, preservation, interim custody or sale of any goods which are subject matter of arbitration agreement, securing the amount in dispute in the arbitration, preservation of the subject matter, interim injunction or appointment of receiver or other interim measures, and the court shall have power to same power for making orders in relation thereto. एंड उसके बाद सब सेक्शन 2 सेक्शन 9 का, वेयर बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स अ कोर्ट पासिस एन ऑर्डर फॉर इंटरिम मेजर, द आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग शैल बी कमेंस्ड विद इन 90 days फ्रॉम द डेट ऑफ सच ऑर्डर. Once the arbitral tribunal has been constituted, court shall not entertain an application under subsection 1 unless the court finds the circumstances exist which may not render the remedy provided under section 17 efficacious. तो बेसिकली कहना क्या चाहते हैं कि एक बार अगर कोर्ट ने इंटरिम ऑर्डर पास कर दिया है और आर्बिट्रेट प्रोसीडिंग अभी स्टार्ट नहीं हुई है, देन ऑर्डर पास करने के विद इन 90 days प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जानी चाहिए. और अगर आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूट हो गया है, then court shall not entertain application under section 9 until and unless it feels that remedy under section 17 is unefficacious. और section 17 में क्या रेमेडी है, इंटरिम मेजर बाय द ट्राइब्यूनल. सेम मेजर्स जो है ट्राइब्यूनल भी ग्रांट कर सकता है. ठीक है, उसके बाद सेक्शन 10 आ जाता है, नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर्स. नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर्स में है, द पार्टीज आर फ्री टू डिटरमिन द नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर्स प्रोवाइडेड दैट सच नंबर शेल नॉट बी एन इवन नंबर. पार्टीज को इतने भी नंबर डिटरमिन कर सकती है आर्बिट्रेटर के, प्रोवाइडेड वो एक ऑड नंबर हो. Failing the determination referred to in subsection 1, the arbitral tribunal shall consist of sole arbitrator. मतलब अगर पार्टीज ने डिटर्मिन करा कि वो 4 आर्बिट्रेटर या 2 आर्बिट्रेटर मतलब इवन नंबर उन्होंने सिलेक्ट किए, तो फिर हम ये माना जाएगा कि वो एक ट्राइब्यूनल जो है उसमें एक सोल आर्बिट्रेटर होगा, ना कि 2 या 4. सेक्शन 11, a person of any nationality may be an arbitrator unless otherwise agreed by the parties. और ये एक चीज़ भी है, हर जगह आर्बिट्रेशन एक्ट में पार्टीज़ के कंसेंट को प्रेफरेंस दिया गया. अगर पार्टीज़ कंसेंसस में आ जाती हैं तो उन्हीं के अकॉर्डिंग प्रोसीडिंग कंडक्ट की जाएंगी. तो पर्सन ऑफ एनी नेशनलिटी मे बी एन आर्बिट्रेटर अनलेस अदरवाइज एग्रीड बाय द पार्टीज. Subject to subsection 6, parties are free to agree on a procedure for appointing the arbitrator or arbitrators. नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर्स एग्री करने के लिए सेक्शन 10 में और उनको अपॉइंट करने का प्रोसीजर सेक्शन 11 में है. फेलिंग एन एग्रीमेंट रेफर टू इन सबसेक्शन 2 इन एन आर्बिट्रेशन विद 3 आर्बिट्रेटर्स. इसको हम एक टेबल फॉर्म में अगर करें तो वो बेटर है. मैं आपको वेट, पार्टीज आर फ्री टू एग्री प्रोसीजर ऑफ अपॉइंटमेंट अंडर सेक्शन 11 सबसेक्शन 2. इसमें अगर पार्टीज हैव एग्रीड टू द प्रोसीजर बट कुड नॉट फॉलो इट, then the procedure under section 11 subsection 4 will be followed. And in case the parties are not able to agree on the procedure,
Then in case there are 3 arbitrators, then procedure under section 11(3), and in case of sole arbitrator, procedure under section 11 subsection 5. वो क्या है? In case parties have not been able to agree on the procedure but they have agreed that 3 arbitrators will be there, the procedure क्या होगा? Each party will appoint 1 arbitrator, then the 2 appointed arbitrators will appoint a 3rd arbitrator. अगर if the 2 arbitrators have could not agree to third arbitrator within 30 days, then the party make an application and appointment is made by the arbitral institution who shall be designated by Supreme Court or High Court under section 11 subsection 3A. By the arbitral appointment by arbitral institution by which shall be designated by Supreme Court in case of international commercial arbitration and by High Court in case of other than international commercial arbitration. यही सेम प्रोसीजर जो कि पार्टी एप्लीकेशन फाइल करेगी और आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन अपॉइंटमेंट करेगा, ये सेम प्रोसीजर यहाँ पर होगा अगर उन्होंने जो एग्रीड प्रोसीजर था वो फॉलो नहीं कर पा रहे हैं. ठीक है. And in case of sole arbitrator, then if parties fail to appoint anyone within 30 days of request of other party, then the same procedure as under section 11 subsection 4 जो कि है ये वाला. ठीक है. If appointment by arbitral institution, then under section 11 subsection 8, before such appointment, inquiry shall be made by the institution by asking the person for disclosure in writing by respective arbitrator about his qualification, interest in the subject matter, etc. And request to more than one institution अगर की गई है, then request made फर्स्ट विल हैव द अथॉरिटी. मतलब अगर एक से ज़्यादा आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन को हमने रिक्वेस्ट कर दिया आर्बिट्रेटर अपॉइंट करने की, तो जिसको सबसे पहले रिक्वेस्ट करी थी उसी की अपॉइंटमेंट वैलिड होएगी. एंड एप्लीकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर विद इन 30 days डिस्पोज्ड ऑफ फ्रॉम द सर्विस ऑफ नोटिस. जो आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन है उसके पास अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर की एप्लीकेशन लगी, उसको विद इन 30 days उसको डिस्पोज ऑफ करना है. ठीक. अब हम इसको बेयर एक्ट से देखते हैं तो इजीली समझ आ जाए. सब्जेक्ट टू सबसेक्शन 6, पार्टीज आर फ्री टू एग्री ऑन अ प्रोसीजर फॉर अपॉइंटिंग द आर्बिट्रेटर. फेलिंग एनी एग्रीमेंट रेफर टू इन सबसेक्शन 2. In an arbitration with 3 arbitrators, each party shall appoint 1 arbitrator, and the 2 appointed arbitrators shall appoint the 3rd arbitrator, who shall act as the presiding arbitrator. Then, if the appointment procedure under subsection 3 applies and a party fails to appoint an arbitrator within 30 days from the date of receipt of request to do so from other party, or 2 appointed arbitrators fail to agree on 3rd arbitrator within 30 days from the date of their appointment, then the appointment shall be made upon application of a party by arbitral institution designated by the Supreme Court in international commercial arbitration or by the High Court in other arbitrations. Subsection 5, failing an agreement referred to in subsection 2 in an arbitration with a sole arbitrator. If parties fail to agree on arbitrator within 30 days from receipt of request by one party from other party, so agree the appointment shall be made upon application of a party in accordance with provisions of subsection 4, where under an appointment procedure agreed upon parties, a party fails to act under that procedure, or parties or the 2 appointed arbitrators fail to reach appointment expected of them, or person including institution fail to perform any function entrusted to him, then appointment shall be made on application of a party by arbitral institution designated by Supreme Court in case of international commercial arbitration and by High Court in other cases. ये हमारा डिलीट हो गया. ये 2019 अमेंडमेंट के थ्रू आया है, क्योंकि आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन का कंसेप्ट ही 2009 अमेंडमेंट से आया है, जो कि हमने सेक्शन 2 सब सेक्शन सी ए डेफिनेशन में पढ़ा था. तो यहाँ पर भी सारा कुछ चेंज हुआ है. ठीक है. उसके बाद सबसेक्शन 6B, द डेजिग्नेशन ऑफ एनी person or institution by Supreme Court or as the case may be High Court for the purpose of this section shall not be regarded as delegation of judicial power by the Supreme Court or High Court. Okay. उसके बाद the subsection 8, the arbitral institution before appointing an arbitrator shall seek a disclosure in writing from the prospective arbitrator having due regard to qualification, content of disclosure and other consideration
likely to secure the appointment of independent and impartial arbitrator. Subsection 9, in case of appointment of sole or third arbitrator in an international commercial arbitration, the institution may appoint an arbitrator of nationality other than the nationality of the parties where the parties belong to different nationalities. ठीक है. उसके बाद है subsection 11, where more than one request has been made under subsection 4 or 5 or 6 to different arbitral institutions, then the institution to whom request has been first made under the relevant subsection shall be competent to appoint. Where the matters referred to in subsection 4, 5, 6, 7, 8 arise in international commercial arbitration, the arbitral institution those subsection reference to the arbitral institution designated under section 10(3)(a). Then subsection 13, application made under this section for appointment of arbitrator shall be disposed of by the institution within a period of 30 days from the date of service of notice on the opposite party. ठीक है. Then subsection 14, arbitral institution shall determine the fees of tribunal and the manner of its payment to the arbitral tribunal, rates specified in the 4th schedule. For the removal of doubts, it is clarified that this subsection shall not apply to international commercial arbitration in case where parties have agreed to determine fees as per rules of arbitral institution. Okay, ये हो गया सेक्शन 11 कंप्लीट, जिसमें प्रोसीजर था अपॉइंटमेंट का. उसके बाद सेक्शन 11A, पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू अमेंड द 4th रूल. इसमें बस यही याद रखना कि 4th शेड्यूल अमेंडमेंट की पावर किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है. देन सेक्शन 12 ग्राउंड्स ऑफ चैलेंज और उसका प्रोसीजर सेक्शन 13 में है. ठीक है, सेक्शन 12 से स्टार्ट करते हैं. अब हम इसको भी पहले हम एक टेबल के फॉर्म में देख लेते हैं. ठीक है, सेक्शन 12 में है ग्राउंड्स ऑफ चैलेंज और 13 में है चैलेंज का प्रोसीजर. 12 सबसेक्शन 3 में बताया कि द सर्कमस्टांसिस विच अराइजिंग डाउट ऑन हिज इंडिपेंडेंस और इम्पार्शियलिटी or he is not possessing qualification as agreed by the parties, or under section 12 of section 5 he is related with the parties as per 7th schedule, he became person to be ineligible to be appointed as arbitrator. However, parties may waive the objection under this subsection by express agreement in writing. In section 12 of section 4, parties can challenge only for reasons of which they became aware after his appointment. ठीक है. और सेक्शन 13 है प्रोसीजर फॉर चैलेंजिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर. पार्टीज में एग्री द प्रोसीजर सब्जेक्ट टू सेक्शन 12 ऑफ सेक्शन 4, दैट इज चैलेंज ओनली फॉर रीजन ऑफ विच ही बिकेम अवेयर आफ्टर अपॉइंटमेंट. दे मे एग्री ऑन द प्रोसीजर ऑफ चैलेंजिंग द अपॉइंटमेंट. If not agreed, then section 13 subsection 2 apply, that is within 15 days of becoming aware of the disqualification, parties present written statement of challenge to arbitral tribunal, and in this case if the arbitrator withdraws or agrees to the challenge, then it's then his term comes to an end, or if he does not withdraw, then tribunal shall decide. If challenge not successful, arbitration proceedings continue and the award is given. Application application to set aside the award under section 34 is made. If award is set aside, court decide whether fees to be paid or not to the arbitrator. ठीक है, अब हम इसको बेयर एक्ट से पढ़ लेते हैं. Section 12 grounds of challenge, where a person is approached if in connection with his possible appointment as arbiter, he shall disclose in writing the circumstances which are likely to give rise to the justifiable doubts as to his independence or impartiality, and which is likely to affect his ability to devote sufficient time to the arbitration and complete the entire arbitration within the period of 12 months. Then arbitrator shall, from the time of his appointment and throughout the arbitral proceedings, shall without delay disclose to the parties in writing following circumstances as under subsection 1. Arbitrator may be challenged only if दो ही grounds है challenge के. Circumstances exist that give rise to justifiable doubts as to independence or impartiality, or does not possess qualification agreed by the parties. Party may challenge arbitrator appointed by him in whose appointment he has participated only for reasons he became aware after appointment is made, notwithstanding any prior agreement.
A person whose relationship with parties falls under any of the categories in 7th schedule, he shall become ineligible to be appointed as arbitrator, provided parties may, subsequent to dispute having arisen, waive the applicability of this subsection by express agreement in writing. Then section 13, the procedure of challenge subject to subsection 4. Parties are free to agree on procedure for challenging the arbitrator. Subsection 4 क्या है? If a challenge under procedure is upon parties is not successful, an arbitral tribunal shall continue an arbitral proceeding and make an arbitral award. Failing an agreement referred to in subsection 1, party who intends to challenge an arbitrator shall within 15 days of becoming aware of the constitution of arbitral tribunal or after becoming aware of circumstances referred to in section 12 of section 3, send a written statement of reasons for challenge to arbitral tribunal. Unless the arbitrator challenged under subsection 2 withdraws from his party, the arbitral tribunal shall decide on the challenge. और आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल हमने क्या पढ़ा था? मीन्स द सोल आर्बिट्रेटर और पैनल ऑफ आर्बिट्रेटर्स अंडर सेक्शन 2 हमने पढ़ा था. आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल, सोल आर्बिट्रेटर और पैनल ऑफ आर्बिट्रेटर्स, मतलब बेसिकली जिसको हमने चैलेंज करा है, जिसकी अथॉरिटी को, वही डिसाइड करेगा. इफ अ चैलेंज अंडर एनी प्रोसीजर एग्रीड अपॉन पार्टीज is not successful, the tribunal shall continue and arbitral proceedings and make an arbitral award. Where award is made under subsection 4, the party challenging the arbitrator may make an application for setting aside such an arbitral award in accordance with section 34. Where arbitral award is set aside, the court may decide whether arbitrator is entitled to any fees. ठीक है, सेम ही है जो हमने अभी शॉर्ट फॉर्म में टेबुलर फॉर्म में पढ़ लिया था. उसके बाद फेलियर और impossibility to act. The mandate of an arbitrator shall terminate and he shall be substituted by another arbitrator if he becomes de jure or de facto unable to perform his functions or for other reason fail to act without undue delay and he withdraws from his office or parties agree to the termination of his mandate. Okay, and वो याद रखना. तो मैंडेट कब टर्मिनेट होगा? एंड ही शैल बी सब्सटीट्यूटेड इफ ही बिकम्स डी ज्यूरे और डी फैक्टो अनेबल टू परफॉर्म हिज फंक्शंस और फॉर अदर रीजंस फेल टू एक्ट विदाउट डिले एंड ही विदड्रॉज फ्रॉम द ऑफिस और पार्टीज एग्री टू टर्मिनेट हिज मैंडेट. सेक्शन 15, टर्मिनेशन ऑफ मैंडेट एंड सब्सटीट्यूशन ऑफ आर्बिट्रेटर. In addition to circumstances referred to in section 13 or 14, the mandate shall terminate where he withdraws from office or pursuant to agreement of the parties. Where the mandate of arbitrator terminates, substitute arbitrator shall be appointed according to the rules unless otherwise agreed by the parties. When an arbitrator is replaced, any hearings previously held may be repeated at the discretion of tribunal unless otherwise agreed. An order or ruling of tribunal made prior to the replacement of arbitrator shall not be invalid solely because there has been a change in the composition of tribunal. But अगर parties otherwise agree करती हैं तब ये invalid हो सकता है. ठीक है, ये हो गया सेक्शन 15. सेक्शन 12 में हमारा ग्राउंड्स थे चैलेंज के, 13 में चैलेंज का प्रोसीजर, 14 में फेलियर और इम्पॉसिबिलिटी टू एक्ट, then the mandate shall terminate, and section 15 में termination of mandate and substitution of arbitrator where he withdraws from the office or any agreement between the parties. ठीक है, उसके बाद चैप्टर 5 है, सेक्शन 16 से स्टार्ट होता है हमारा, और ये सेक्शन 16 से लेके हमारा है सेक्शन 17 तक. दो ही सेक्शन है इसमें, जुरिस्डिक्शन ऑफ आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल में. सेक्शन 16 है कॉम्पिटेंस ऑफ आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल टू रूल ऑन इट्स ओन जुरिस्डिक्शन. इसको हम प्रिंसिपल्स ऑफ कॉम्पिटेंस भी अगर कहेंगे तो कौन से सेक्शन में है? 16 में. इसका क्या होता है? द आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल में रूल ऑन इट्स ओन जुरिस्डिक्शन इंक्लूडिंग रूलिंग ऑन एनी ऑब्जेक्शन विद रिस्पेक्ट टू existence or validity of the arbitration agreement, and for that purpose arbitration clause is independent from the other terms of the contract, and decision by the tribunal that contract is null and void shall not entail ipso jure the invalidity of the arbitration clause. तो अगर
कॉन्ट्रैक्ट आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट चैलेंज होता है तो क्लॉज जो है वो इंडिपेंडेंट कंसीडर किया जाएगा, और अगर कॉन्ट्रैक्ट नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया भी जाता है ट्राइब्यूनल के थ्रू, देन इट शैल नॉट रेंडर द क्लॉज arbitration clause as invalid. A plea that arbitral tribunal does not have jurisdiction shall be raised not later than submission of statement of defense. However, party shall not be precluded from raising such plea merely because that he has appointed or participated in the appointment of arbitrator. Plea that arbitral tribunals exceeding the scope of its jurisdiction shall be raised as soon as the matter alleged to be beyond the scope is raised during the arbitral proceedings. The arbitral tribunal may in either of the cases admit a later plea if delay is justified. The arbitral tribunal shall decide on a plea referred to in subsection 2 or 3 relating to his jurisdiction or exceeding his jurisdiction, and where arbitral tribunal decides in rejecting the plea, it may continue with the proceeding and make the award. Party aggrieved by such award make an application for setting aside the award under section 34. ठीक है. प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पिटेंस क्या होता है? दैट द आर्बिट्रेटर आर एंटाइटल्ड टू बी द फर्स्ट टू डिटर्मिन देयर जुरिस्डिक्शन विच इज लेटर रिव्यूएबल बाय द कोर्ट व्हेन देयर इज एक्शन टू इन्फोर्स और सेट असाइड द आर्बिट्रल अवार्ड. इसके बाद सेक्शन 17 है इंटरिम मेजर्स ऑर्डर बाय आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल. इंटरिम मेजर बाय कोर्ट थे सेक्शन 9 में, इंटरिम मेजर बाय ट्राइब्यूनल है सेक्शन 17 में. अ पार्टी में ड्यूरिंग द आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स बट कोर्ट के पास इंटरिम की पावर है ड्यूरिंग, ऑन और बिफोर और आफ्टर द आर्बिट्रल प्रोसीडिंग, बट बिफोर द अवार्ड इज executed. Apply to the arbitral tribunal, that is only during arbitral proceedings the tribunal can grant interim measure. It is for appointing the guardian for minor or unsound mind, or for interim measure to protection of the property or subject matter of the dispute, and subject to order passed in appeal under section 37. Any order issued by tribunal under this section shall be deemed to be an order of court and enforceable under the CPC in the same manner as if it were an order of the court. उसके बाद हमारा आता है चैप्टर 5 कंडक्ट ऑफ आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स. इसमें सेक्शन 18 है इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ पार्टीज. द पार्टी shall be treated with equality and each party should be given a full opportunity to present his case. इसमें जस्ट हेडिंग याद रखना है. सेक्शन 18 में इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ पार्टीज. सेक्शन 9 डिटर्मिनेशन ऑफ रूल्स एंड प्रोसीजर. कौन डिटर्मिन करेगा? आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल नॉट बाउंड बाय CPC और इंडियन एविडेंस एक्ट. Subject to this parties are free to agree on procedure to be followed by tribunal, and failing any agreement, tribunal may conduct the proceeding in matter it considers appropriate. Power of tribunal includes power to determine the admissibility, relevancy, materiality or weight of any evidence. तो बेसिकली ना ये CPC से बाउंड है ना ये एविडेंस से बाउंड है. Parties free to agree, and in case parties fail then tribunal shall agree. 20 place of arbitration. Parties are free to agree the place of arbitration. Failing agreement, the place is determined by tribunal having regard to circumstances including the convenience of the parties. Tribunal may meet at any place it consider appropriate for consultation among its members, for hearing witness, expert parties, inspection of documents, etc. ठीक है. Section 21 commencement of arbitral proceedings unless otherwise agreed by the parties. Arbitral proceeding important है. Arbitral proceedings in respect of particular dispute commence on the date on which a request for that dispute to be referred to arbitration is received by the respondent. तो बेसिकली डिस्प्यूट अराइज हुआ है तो उसके बाद एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को रिक्वेस्ट करी है टू रेफर द डिस्प्यूट टू आर्बिट्रेशन. जब वो रिक्वेस्ट रिस्पोंडेंट ने रिसीव कर ली है उस टाइम से हम मान लेते हैं कि प्रोसीडिंग्स कमेंस हो गई हैं. सेक्शन 22 लैंग्वेज. Parties are free to agree upon the language to be used in proceedings, and in case they fail then tribunal shall determine the language. The tribunal may order that any documentary evidence shall be accompanied by a translation into language agreed upon the parties or determined by the tribunal. 23 statement of claim and defense. Within the period of time agreed by the parties or determined by tribunal, the claimant shall state the facts supporting his claim. Respondent shall state his defense.
Parties may submit with their statement all documents they consider relevant. Respondent may also submit a counterclaim or plead a set-off within the scope of arbitration agreement. Unless otherwise agreed, party may amend or supplement his claim or defense during the course of proceeding unless the tribunal considers it inappropriate. तो अमेंड भी कर सकते हैं अनलेस ट्राइब्यूनल कंसीडर इनएप्रोप्रिएट. 2019 अमेंडमेंट में एक हमने ऐड किया है ताकि आर्बिट्रेशन जो है वो जल्दी ख़त्म हो विद इन टाइम बाउंड मैनर. तो हमने क्या करा है, सबसेक्शन 4 ऐड करा है विच इज स्टेटमेंट ऑफ क्लेम एंड डिफेंस शैल बी कंप्लीटेड विद इन 6 months ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर that is when the arbitrator received a communication in writing of his appointment. Starting from that date till 6 months the statement of claim and defense shall be completed by both the parties. ठीक है. और commencement of arbitral proceedings हमने कब कहा था, जब request for reference the dispute to the arbitration has been received by the respondent. ठीक है. 18 में इक्वल अपॉर्चुनिटी, 19 में डिटर्मिनेशन ऑफ रूल ऑफ प्रोसीजर, 20 में प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन, 21 में कमेंसमेंट ऑफ प्रोसीडिंग्स, 22 में लैंग्वेज, 23 में क्लेम एंड डिफेंस स्टेटमेंट जिसके लिए 6 months का टाइम है, 24 में हियरिंग एंड रिटन प्रोसीडिंग्स. अनलेस अदरवाइज एग्रीड बाय द पार्टीज, आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल डिसाइड वेदर टू होल्ड ओरल प्रोसीडिंग or whether proceeding shall be conducted on basis of documents and other material. Arbitral tribunal shall hold oral proceeding on a request by party unless parties have agreed that no oral proceeding shall be held, provided that tribunal as far as possible hold oral hearings on day-to-day basis and may grant adjournment but with exemplary cost. Parties shall be given advance notice of any hearing. All statements, documents or other information made to tribunal shall be communicated to other party. Any expert or evidentiary document shall be communicated to the parties. Then section 25 default of a party. अगर claimant का default है in his statement of claim में, then tribunal shall terminate the proceeding, and in case respondent fail to communicate his statement of defense, then he shall continue with the proceeding without treating that failure as admission of allegation, and discretion to treat the right of respondent to file a statement as being forfeited. Okay. Then if a party fails to appear at oral hearing or produce documentary evidence, tribunal may continue proceedings and make the arbitral tribunal on the evidence before it. ठीक है. उसके बाद 26 expert appointment by tribunal. Only unless otherwise agreed by parties, tribunal may appoint one or more experts on specific issue to be determined by tribunal and require a party to give expert any relevant information. उसके बाद सेक्शन 27 कोर्ट टू असिस्ट इन टेकिंग एविडेंस. ट्राइब्यूनल और अ पार्टी विद द अप्रूवल ऑफ ट्राइब्यूनल may apply to a court for assistance in taking evidence. The application shall specify name and address of the parties and the arbitrator, general nature of claim, relief sought, evidence. ये सब तो इम्पॉर्टेंट नहीं है. उसके बाद है कोर्ट में within its competence and according to rules execute the request by ordering that evidence be provided directly to the tribunal. In this section, process includes summons and commission and examination of witness and summons to produce documents. ठीक है. तो ये हमारा हो गया चैप्टर 5 सेक्शन 18 से लेके सेक्शन 27 तक. इसके बाद आता है चैप्टर 6 मेकिंग ऑफ आर्बिट्रल अवार्ड एंड टर्मिनेशन ऑफ प्रोसीडिंग्स. इसमें सेक्शन 28 रूल्स एप्लीकेबल टू सबस्टांस ऑफ डिस्प्यूट वेयर द प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन इज सिचुएटेड इन इंडिया. In an arbitration other than international commercial, in domestic arbitration, the tribunal shall decide the dispute submitted to arbitration in accordance with substantive law for the time being in force in India. कौन से अगर प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन इंडिया में है और वो डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन है, देन कौन सा लॉ अप्लाई होगा, सब्सटेंटिव लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स इन इंडिया. And in case of international commercial arbitration, the tribunal shall decide the dispute in accordance with rules of law designated by the parties. And
Any designation by parties of law or legal system shall be construed as referring to substantive law of that country and not conflict of law rules. Failing any designation of law, tribunal may apply the rules of considers appropriate. और मतलब कि कौन से रूल्स अप्लाई होंगे डिस्प्यूट डिसाइडिंग में. अगर डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन है, प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन इन इंडिया है, देन सब्सटेंटिव लॉ ऑफ इंडिया. एंड इन केस ऑफ इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन, द लॉ ऑफ द place were designated by the parties, and law here means the substantive law of that country. And in case parties fail to designate any place, then the tribunal shall decide. The tribunal shall decide ex equo et bono, that is from equity and concise, or as amiable compositor only if parties have expressly authorized it to do. उसके बाद अगर पार्टीज ने एक्सप्रेसली ऑथराइज किया है ट्राइब्यूनल को, तभी वो डिसाइड कर सकते हैं एक्स एक्वो एट बोनो और एज एमिएबल कॉम्पोसिट्योर. ठीक है. देन सेक्शन 29 डिसीजन मेकिंग बाय पैनल ऑफ आर्बिट्रेटर्स unless otherwise agreed by parties. Arbitrary proceedings with more than one arbitrator shall be decided by majority of all its members, and the parties, if authorized by the parties or members of tribunal, question of proceeding may be decided by the presiding arbitrator. Then section 29A, time limit for arbitral award, ये भी चेंज कर दिया with effect from 2019. The award shall be made within a period of 12 months from the date of completion of proceedings. ठीक है. If it is not the international commercial arbitration, and in case it is international commercial arbitration, then endeavor shall be made to make the award within 12 months from the date of completion of proceedings. ठीक है. ये हो गया 29A सबसेक्शन 1. कितना टाइम मिला है हमें? 12 months from the date of completion of proceedings. If award is made within 6 months from the date arbitral tribunal enter upon reference, the tribunal shall be entitled to receive the such amount of additional fees to it. मतलब कि अगर वैसे तो 12 months का टाइम है, लेकिन अगर 6 months from the date the arbitral tribunals enters upon the reference, अगर within 6 months उसने अवार्ड पास कर दिया है, देन उसको एडिशनल फीस मिलेगी. एंड ये क्यों है? टू encourage the speedy disposal. Parties may by consent extend the period specified in subsection 1, जो कि 12 months था, by a further period of not exceeding 6 months. If the award is not made within the period specified in subsection 1 or extended period under subsection 3, the mandate of arbitrator shall terminate unless the court has extended the period, and provided while extending the period, court finds that proceedings have been delayed for reason attributable to tribunal, it may order reduction of fees by not exceeding 5% for each month of such delay. The extension of period referred to in subsection 4 may be on the application of any of the parties, and while extending the period referred to in subsection 4, it shall be open to the court to substitute one or all of the arbitrators. If the arbitral tribunal shall be reconstituted, shall be deemed to be in continuation of the previously appointed tribunal, it shall be open to the court to impose actual or exemplary cost upon the parties in case of delay, and any application filed under subsection 5 shall be disposed of by the court as expeditiously as possible, and endeavor shall be made to dispose of it within period of 60 days from the date of service of notice on the opposite party. 29B, fast track procedure. Notwithstanding anything contained in this act, parties to an agreement may at any stage, either before or at the time of appointment of tribunal, agree in writing the dispute resolved by fast track procedure. और procedure क्या है subsection 3 में बताया है. Procedure है the tribunal shall decide the dispute on the basis of written pleadings and without any oral hearing. It has the power to call for any further information or clarification. Any oral hearing shall be held only at the request or the tribunal consider necessary. The arbitral tribunal may dispense with technical formalities. Award shall be made within 6 months from the date the arbitral tribunal enters upon reference.
and the fees payable to the arbitrator and manner of payment shall be as agreed by the arbitrator and the parties. Section 30 Settlement. Arbitral tribunal may use mediation, conciliation or other procedure at any time during the arbitral proceeding to encourage the settlement. If the parties settle the dispute, the tribunal shall terminate the proceeding and, if requested by parties and not objected by tribunal, record the settlement in form of arbitral award on agreed terms. Arbitral awards on agreed terms shall be made in accordance with section 31, which is normal award होता है, and it shall have the same status and effect as any other arbitral award on substance of dispute. Section 31 Form and content of arbitral award. It shall be in writing, signed by the parties, with more than one arbitrator, then signature of majority or all the members is sufficient as the reason for any omitted signature stated. The award shall state the reason upon which it is based unless it is agreed that no reason are to be given, और द अवार्ड इज़ अंडर सेक्शन 30 जो कि सेटलमेंट थी उसके बेसिस पे है, तो भी रीज़न देने की ज़रूरत नहीं है. इट शेल अवार्ड शेल स्टेट इट्स डेट एंड प्लेस and the award shall be deemed to have been made at that place. Award is made a signed copy delivered to the each party. A tribunal may make an interim award. Then unless award otherwise direct, it shall carry an interest at the rate of 2% higher than the current rate of interest prevailing on the date of award from the date of award to the date of payment. Sum directly to be paid by award shall, unless the award otherwise direct, carry interest at the rate of 2% higher than the current rate of interest prevalent on the date of award from the date of award to the date of payment. Cost of arbitration fixed by the tribunal under section 31A. Regime for cost. Court or tribunal shall have discretion to determine whether costs are payable by one party to another, the amount of cost, and when the costs are to be paid. Cost means reasonable cost relating to arbitration का खर्चा, आर्बिट्रेटर का खर्चा, कोर्ट का, विटनेस, लीगल फीस, एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेशन फीस और any other expenses in connection with arbitral or court proceedings. And general rule is the cost shall follow the event, that is the unsuccessful party shall be ordered to pay the cost of the successful party. उसके बाद section 32 termination of proceeding. The proceeding shall be terminated by final award or order of tribunal under subsection 2. Subsection 2, tribunal shall issue an order of termination of proceeding where claimant withdraws his claim unless a respondent objects to the order and the tribunal recognizes legitimate interest on his part in obtaining final settlement, और where the parties agree on the termination of proceeding तब भी tribunal terminate कर देगी, और the tribunal finds that continuation of proceeding become unnecessary or impossible. Subject to sections 33 and 34, mandate of tribunal shall terminate with the termination of arbitral proceedings. 33 क्या है? करेक्शन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ अवार्ड. अगर टर्मिनेट हो भी गई है आर्बिट्रल प्रोसीडिंग, लेकिन अगर कोई करेक्शन और इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन डिस्प्यूट है या एडिशनल अवार्ड है, तब वो कंटिन्यू करेंगे हम, तो उसको उस पर्पस के लिए वो टर्मिनेट नहीं मानी जाएगी. विदिन 30 days ऑफ रिसीट ऑफ अवार्ड अनलेस अदर पीरियड हैज़ बीन एग्रीड बाय द पार्टीज. मतलब हर चीज़ में पार्टीज को डिस्क्रिशन है. पार्टी विद नोटिस टू अदर पार्टी may request the tribunal to correct any computation error, clerical or typographical error or any other error of similar nature occurring in the award, if so agreed by the parties. With notice to other party may request for the interpretation of a specific point or part of the award. If the tribunal consider request justified, it shall make correction within 30 days from the date of receipt of request, and interpretation shall form part of the award. Tribunal may correct any order on its own initiative within 30 days from the date of the award. करेक्शन के लिए टाइम कितना है? 30 days. Unless otherwise agreed by the parties, party may request within 30 days of the receipt of award make an additional arbitral award as to claim presented in proceeding but omitted from the award.
If the tribunal consider request to be justified, it shall make an additional award within 60 days from the date of such request. ये तो था करेक्शन के लिए 30 डेज का टाइम होता है, और ये सबसेक्शन 4 में है एडिशनल आर्बिट्रल अवार्ड के लिए विदिन 30 डेज रिक्वेस्ट करेंगे। कौन से क्लेम्स के लिए? जो कि प्रोसीडिंग में क्लेम तो किए थे बट अवार्ड में मिसिंग है, और उसके ऊपर 60 डेज में ट्राइब्यूनल डिसाइड करेगा अगर वो जस्टिफाइड लगते हैं। द ट्राइब्यूनल में एक्सटेंड द टाइम विदिन विच इट शैल मेक करेक्शन और एडिशनल अवार्ड। उसके बाद ये हो गया हमारा चैप्टर 6 ख़त्म। बस अब हमारा रह गया है सेक्शन 34 से 43, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। ठीक है।